लिखने मैं आपको बेसिक सिखाता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का कि रेट लॉ जो होता है ना मेरे दोस्त, रेट लॉ जो होता है वो हमेशा आरडीएस से दिखा जाता है, स्लो स्टेप दिखा जाता है। इन सब में स्लो स्टेप कौन सी है? हाइड्राइड का शिफ्ट होना। तो इस वाली स्टेप में रिएक्टेंट में जो जो भी होगा वो लिखा जाएगा। तो क्या क्या है? एक तो ये वाला है और एक एचसीएचओ है। तो कंसंट्रेशन ऑफ एचसीएचओ एंड कंसंट्रेशन ऑफ HCO माइनस HH ये। लेकिन आप शायद एक बात और जानते होंगे कि कभी भी रेट लॉ जो है वो हमेशा, ये रेट लॉ ऑलवेज इन रिएक्टेंट्स, हमेशा रिएक्टेंट्स की टर्म में ही लिखा जाता है। मतलब सर ये जो है एससीएचओ और एनएच की टर्म में ही लिखा जाएगा, कभी भी किसी और के टर्म में लिखा नहीं जाता। अब यहाँ पर एससीएचओ तो आ गया, लेकिन वो जो बचा है तो वो कहां से आया? वो ये रहा, वो ये रहा। तो इसका मतलब इस वाली रिएक्शन का के क्या होगा? के ऑफ फर्स्ट स्टेप क्या होगा? K1 क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ HCO माइनस OH अपॉन HCHO OH माइनस। समझ गए? ये बताया, ये आपको आता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या किया? तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसको इनटू ले जाऊंगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, लिख दो। तो अब मैंने क्या किया? रेट लो लिखा, रेट लो इक्वल टू K इंटू K1। K1 कहां से आया? ये रहा, इसको इस पूरे पार्ट को इधर ले गया, इसकी वैल्यू आ गई K1 इंटू HCHO इंटू OH माइनस, और पहले था यहाँ पे HCHO। तो HCHO दो बार है तो इसको स्क्वायर कर देता हूँ। एक बताइए, ये एक तो यहाँ से आया, एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर ये आ गया। तो K इंटू K1 को मैंने क्या कर दिया? K डैश कर दिया, HCHO स्क्वायर OH माइनस, दैट इज द रेट लो। समझ गए भाई? तो रेट लो ऑर्डर क्या आ गया? दो और एक थर्ड ऑर्डर। क्या आ गया बेटा? थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। दिस फॉलोज थर्ड ऑर्डर, दिस मैकेनिज्म फॉलोज थर्ड ऑर्डर। समझ गए ब्रो? समझ गए भाई सभी लोग? ये एक्सेस का, ये कहां एक्सेस है? ये कहां एक्सेस है? हाई कंसंट्रेशन है, एक्सेस नहीं है वाले। ये मैकेनिज्म इसमें पता क्या किया? और कंडीशन ड्रास्टिक कर दी, ये बनाया और ये थोड़ी दो दो O माइनस, दो O माइनस को भयंकर पुश मार के इसको जल्दी निकालेंगे, बस इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है। समझा? ट्राई करो। एससीएचओ और ये रहा दो O माइनस वाला, ये आ गया, ये वाला यहां से आया, ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर और OH माइनस के ऊपर। तो मैं काम करता हूं, K डैश कर देता हूं SCHO इंटू HCO माइनस OH H इंटू OH माइनस। मैंने क्या किया? इसकी जगह ये दोनों लिख दिए और K डैश कर दिया। ठीक है, अब ये वाला रिएक्टेंट नहीं है, ये दोनों रिएक्टेंट ये कहां से आया? ये रहा, ये इन दोनों से आया। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, K डबल डैश इंटू SCHO स्क्वायर और NaOH भी स्क्वायर, दैट इज आंसर 4, फोर्थ ऑर्डर। समझ में आया?
और एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस करने लगा हूं, तो H पॉजिटिव आयन, ये H पॉजिटिव आयन सबसे पहले अटैक करता है नाइट्रोजन के लोन पेयर पे। अब जैसे ही नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक होगा इस प्रोटॉन का फ्रॉम एसिडिक मीडियम, तो ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में रिपीट ये जो बॉन्ड बना हुआ है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के यूज हो रहे हैं, मतलब लोन पेयर नाइट्रोजन वाला यूज हो रहा है। सो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ रिटेन हुआ और एक H पॉजिटिव आयन की तरफ चला गया, तो हाइड्रोजन का तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, बल्कि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज रेस्ट किया। अब जो नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन एटम, दिस इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर रेस्ट नहीं कर पाएगा, यहां से पाई इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा अपना पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई करने के लिए। द मोमेंट दिस पाई बॉन्ड शिफ्ट्स टुवर्ड्स नाइट्रोजन, जैसे ही पाई बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और वाटर न्यूक्लियोफाइल बनकर यहां कार्बन पर अटैक करेगा। सो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड देख रहे हैं, जो बॉन्ड बना हुआ है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के यूज हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ रिटेन हुआ है, एक कार्बन की तरफ चला गया है, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज रेस्ट कर रहा है। नाउ ऑक्सीजन इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा नहीं रहेगा, यहां से डीप्रोटोनेशन होगा, डीप्रोटोनेशन में हेल्प पानी कर सकता है। हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स पढ़ रहे हैं, तो वाटर इज इन द मीडियम दैट कैन आल्सो एक्ट लाइक अ बेस, तो पानी यहां से H पॉजिटिव आयन निकालने में हेल्प करेगा, एड देगा, और जैसे यहां से H पॉजिटिव आयन निकला, मुझे ये टॉटोमर ऑफ अमाइड मिल गया। देखिए नाउ दिस इज टॉटोमर ऑफ अमाइड, हाउ कम, ये दिस इज डबली बॉन्डेड कार्बन जिसके ऊपर OH लगा है, और अगर प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन यहां से यहां शिफ्ट हो जाए, सो वी विल एंड अप गेटिंग एन अमाइड। सो ये साइनाइड का जो भी हाइड्रोलिसिस किया मैंने, दिस इज एसिडिक कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स, एंड अभी पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोलिसिस करने पर अमाइड मिलता है, ये आप रिटेन कीजिएगा, दिमाग में रखिएगा कि दिस इज एन एसिड डेरिवेटिव, एंड जितने एसिड डेरिवेटिव्स हैं दे अंडरगो एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये एसाइल ग्रुप मौजूद है, इसमें RCO ग्रुप मौजूद है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा तो H पॉजिटिव आयन सबसे पहले अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, जैसे ही यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पर, पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन, जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, पानी ने न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक किया, इस ऑक्सीजन पर डेवलप हुआ पॉजिटिव चार्ज, यहां से डीप्रोटोनेशन हुआ, और ये प्रोटॉन जो यहां से H पॉजिटिव आयन निकला, दिस कैन अटैक एट दिस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, और यहां से अमोनिया लीव किया न्यूट्रल फॉर्म में। देखिए जो H पॉजिटिव आयन है वो यहां से इसने नाइट्रोजन के लोन पेयर पर अटैक किया, तो ये जो बॉन्ड बना इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के हैं, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ आया और एक हाइड्रोजन की तरफ चला गया। जैसे ही नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां से अमोनिया न्यूट्रल फॉर्म में एज अ गुड लिविंग ग्रुप इट विल लीव द मॉलिक्यूल। नाउ द मोमेंट अमोनिया लीव्स, जैसे यहां पे अमोनिया लीव करेगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और ऑक्सीजन के लोन पेयर से रेजोनेंस हो जाएगा, एंड जैसे ही रेजोनेंस हुआ, अब इन द नेक्स्ट स्टेप या ऑक्सीजन के लोन पेयर से रेजोनेंस हुआ तो O पर आया पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन ने पॉजिटिव चार्ज बियर किया, ये जो पाई बॉन्ड बना है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के यूज हो रहे हैं, सो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ रहा है, कार्बन की तरफ चला गया है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, और यहां से अमोनिया ने लीव किया था, अब नाइट्रोजन पर लोन पेयर पड़ा है, दिस कैन एक्ट लाइक अ बेस, अमोनिया बेस की तरह एक्ट करेगा यहां पर, और यहां से प्रोटॉन पुल कर लेगा, मेकिंग दिस ऑक्सीजन न्यूट्रल, यहां से H पॉजिटिव आयन हैज गॉन, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनिया यहां बेस एक्ट किया है, प्रोटॉन पुल किया है इसने, एंड इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन, मतलब यहां मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है और साथ में अमोनियम आयन मिला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि जो already. First, we have to understand about the bonding of it. So the bonding is here is somewhat like this. The carbon is having how many electrons? Carbon is having 4 electrons, 1, 2, 3, 4, and nitrogen is having 1, 2, 3, and this one is the 4th electron. And where comes the 5th? 5th is this one. So basically, this is positive, this is negative. I mean to say, what exactly I want to show it to you in another way of writing it is isocyanate has this sort of a viewpoint, or you may also write it like this, that there is a one coordinate bond. So these two electrons are of nitrogen in this shared pair of electron. So this basically, either you take this one or this one, basically you are able to see that in isocyanides there is a development of negative and positive charge already. Now into this, if you add water, the things would be somewhat different. So this is very important to tell you. Let me place it once more for you. As I said, isocyanides has a, I may say here, isocyanides react differently when they are undergoing addition reaction. Addition reaction happens to take place somewhat differently as compared to other function groups which are having double or triple bond. Now see what I'm saying it, that what you are able to see is, first, if in case I add E positive, that is electrophile, this goes here, so it results in the formation of this, and a positive, this N would have positive charge, this carbon becomes carbon got attached with the E. Now what would be the next step? Next step would be the nucleophile. Now here I may ask you where the nucleophile would attack. Generally people say it would attack here, but this is not possible because nitrogen's octet is already complete. Nitrogen's octet is complete, so it has no tendency to gain electron because it cannot cannot extend its bonding that way. So the point is that how does it would happen then? So it would happen in this form. This nucleophile would attack, this is very, very interesting, on this carbon, and this moves here. As a consequence, what is being generated is N double bond C, E, and nucleophile. This is beautiful. What I'm trying to convey to you that isocyanides are the class of compounds. Isocyanide are the class of compounds where electrophile and nucleophile add across same carbon. This is very, very important. Unlike the case of alkenes, alkynes, cyanides, or aldehydes and ketones, where reagents one part add across to one atom, and the one which is added to the next part is either electrophile or nucleophile depending on the type of reaction. Now what add across same carbon? This is very important. Now let us see how the water would have attacked it. In this case, what would be the fate of water? So first you added H positive. So H positive have attacked this. So it resulted in the formation of this one. This is very interesting. And now what would happen? Where would the water would attack? Lone pair of water would attack this carbon rather than this nitrogen. And this goes like this. So as a consequence, most of these steps would be at equilibrium, and this would give you H, and on this side you would get water.
and the one H positive you added that was gone out in the form of H positive here, and you end up getting this species. Now, if you could see this carefully, this particular species which we have written is nothing but, if you tautomerize it, it would reach to this point. Let me show it to you once again what I'm doing it here. So let me place this molecule here. So what I'm saying is that this molecule is N double bond C, R N double bond C. On one side this is OH and this is, now this is what I'm saying is tautomerism. This H gone here, this bond goes here, this goes here. So the H positive takes this position. So this is what you call it as N-alkyl formamide. So this again could add water into it. So what very important here is that in isocyanides, the electrophile and nucleophile, the H positive of water and OH negative of water add across to the same carbon. So we may say here that in the case of isocyanides, the water's H positive and OH negative added across to the same carbon. This is very important to tell you. This is the different viewpoint in the case of iso. If I have water and into this you have catalytic amount of base, this hydrolysis would not happen because this OH negative cannot attack the negative part because there would be negative repulsions. And same is the viewpoint, this OH negative can also not attack this nitrogen because octet of nitrogen is complete. So it has no tendency to gain that electron. It cannot make 5 bonds around it. So we shall be saying that the basic hydrolysis won't happen. Basic hydrolysis is not possible for what? Isocyanides would not undergo basic hydrolysis. Is not possible for basic hydrolysis. Formamide we have already formed, and now if it further undergoes hydrolysis, what shall we be getting? So we shall be getting along with it primary amine. This is going to give you primary amine along with the molecule of formic acid. So now how to figure it out that how this reaction might have happened? So first you can say this is the lone pair which is being attacked by the H positive. Why is it so? Because this lone pair, if can move here, this would intensify the negative charge on carbonyl oxygen, which is more basic in the sense that it can attack this H positive, resulting in the formation of this sort of a species. So what we shall be getting here is this is positive, and along with it you would get this sort of a moiety. So what we shall be writing it here is positive, this is H, this is OH we have generated. Now what can next be happening? This water is going to attack it, and as a consequence of that, this attack of water would result in the formation of NHCOH, positive, and here you would get OH. Now the last step can be this H positive then, because this is having a lone pair, this is intramolecular proton exchange, resulting in the formation of RNH2 positive along with OH, H, OH. Now last step can be shown it like this. This H positive, the one which we have attacked, gone out. This bond goes here and this lose the system. So what goes out is one, the H positive, and you left with the primary amine along with the molecule of formic acid. So this is very important to tell you that now we can conclude it here. This is very important to tell you that isocyanides on acidic hydrolysis first gave you N-alkyl formamide, which on further hydrolysis would give you primary amine along with the formic acid. So first step may be said as partial hydrolysis, and the second step can be said as, if I completely take it from this side to this side, we can say it has to be complete hydrolysis. So most of the time we happen to do the complete hydrolysis, but if in the process, this is delta positive, this is delta negative, this OH negative attacks this and resulting in the formation of this sort of a species. So this is nucleophilic addition, and this would get a negative charge. Now once this get a negative charge, then this abstract H positive from the water. So this results in the formation of this sort of a species, and along with it what goes out is OH negative. This OH negative which we have started with has gone out. That is what you call it as catalytic hydrolysis in the basic medium. Now this particular species may undergo tautomerism to give you the same amide which we have already written in the acidic hydrolysis also. So this amide is being generated again as we did for the acidic in the basic hydrolysis also. You end up getting the same amide, and this amide, if we do the further hydrolysis of it in the basic medium again this OH negative would place it here, this goes here, so resulting in, if I do it in a speedy way, this would get something like this. Although this is not a very favorable step, but a good amount of refluxing for a longer duration of time is required so that it can throw out this amide, which is a bad leaving group as compared to. So this would result in the formation of carboxylic acid. Now what is the driving force? Because this amide is not a very good leaving group. Now this would be nearly irreversible. Once this amide is being formed, this amide snatches out the H positive of the carboxylic acid generated. Once it is being generated, and this results in the formation of ammonia, which is a gas which leaves the reaction mixture, resulting the reaction to be driven to the forward side. So the last equilibrium step is almost irreversible. So that drives this reaction from this side to the side. This is very interesting to tell you. So we can conclude here